You want to make 2026 the new year the best year of your life? If that is so, then you need three things. Very, very important. Listen this video very, very carefully. I'm Dr. Didi Swain, the motivational speaker. Please listen it carefully and write down three important points which I will be going to narrate to all of you to make 2026 the very best year of your life. Number one thing, you should know who you are. It's very, very important. If you do not know who you are, it's very difficult to achieve something in your life. Let me tell you a story. एक बार जनक राजा अपने महल में सोए हुए थे और सडनली जो सिक्योरिटी गार्ड था वो दौड़ के आया, बोला राजन राजन पड़ोसी राजा ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है, तो अभी युद्ध में जाना पड़ेगा। अब राजन घबरा गए थोड़ा सा एंड देन फिर रानी को इंफॉर्मेशन किया। रानी आरती के थाली लेके आई और आरती दे दिया एंड she prepared the king with armors, swords and everything. And जनक राजा बैटल ग्राउंड में चले गए, but unfortunately it was a bad day in the office. He fought valiantly. काफी बड़ा संघर्ष हुआ, काफी बढ़िया लड़े, but it was bad day in the office and he was defeated. He was wounded, he was injured. Then the opposite king who was won the battle asked Janak Raja, hey Rajan, what kind of behavior do you expect from me? Because now you are defeated, you have lost everything. So जनक राजा ने बोला कि हे राजन, जैसे एक राजा दूसरे राजा को व्यवहार देता है वैसे दीजिए. Then after hearing this, the other king was very brave and he said, हे राजन, क्योंकि आप एक राजा हैं, भले ही आप हार गए हैं, मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं आपको तरी पार कर रहा हूं. So this has been my order. Leave the country as soon as possible. Janak Raja is defeated, wounded, badly injured, blood is flowing out, मक्खियां बैठ रहे हैं, चल के जा रहे हैं. राजा जो जीते हुए हैं उन्होंने सारे कंट्री में मैसेज दे दिया कि इनको पानी का एक बूंद भी ना दिया जाए. और जनक राजा चलते जा रहे हैं, थके आ रहे. और राज्य की समाप्ति पे एक मंदिर आया जहां पे एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, तो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. तो जनक राजा वहां पे ऐसे बैठ नहीं सकते क्योंकि आपको पता है हारे हुए को कोई पूछता नहीं है. तो उन्होंने एक बोरा ले लिया. He has taken a gunny bag, put it on his head and sit silently by putting his head down. तो ये जो सज्जन थे, जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, खाना दे रहे थे, वो खाना दे के आ रहे हैं. और जब जनक राजा के पास पहुंचे तो उनका खाना खत्म हो गया. बस स्टार्च और थोड़े का नीचे का जो पानी वाला चावल बचा हुआ था. मैं बोला बाबा जी, मेरा खाना तो खत्म हो गया, बस थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, क्या ये चलेगा? जनक राजा ने बोले कि बेटा कुछ भी दे दो क्योंकि मैं भूख से परेशान हूं. आफ्टर हियरिंग दिस द फिलैंथ्रोपिक, द जेंटलमैन, उन्होंने क्या किया, वो खाना को लेके एक पत्ते में डाल के उनको देने लगे. तो कहां से एक कौवा आ गया, का करके, वो खाने को वो डिस्टर्ब कर दिया, वो खाना नीचे गिर गया. तो जनक राजा हाहाकार में बोले बचाओ 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 बचाओ. तो सिक्योरिटी गार्ड दौड़ के आया, बोला हे राजन हुआ क्या? तो राजा वॉज इन ड्रीम्स, वो सपने में थे. बट एज यू ऑल ऑफ यू नो, जनक राजा इज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल किंग. तो ही आस्क वो सच या ये सच. अब बेचारा सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पता नहीं है. रानी आए, रानी को बुलाया गया कि राजा ऐसे बोल रहे हैं. तो रानी को देखते ही राजा ने बोला कि वो सच ये सच. अब ऐसा चलता रहा, काफी दिन निकल गया. अब राज्य का कुछ भी काम हो नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? तो मन दुखी करके जो राज्य के होम मिनिस्टर थे वो घूम रहे थे. तो उनको एक बार याद आया कि हम लोगों के राज्य में एक बहुत बड़े सज्जन है. फॉर्चुनेटली उनसे एक दिन मुलाकात हो गया. उनका नाम है अष्टवक्र मुनि. तो इन्होंने अष्टवक्र मुनि को जो है, he has told all the story, and after listening all the story, अष्टवक्र मुनि has said to the minister that don't worry, tomorrow I will come to the Raj Sabha and I will take care. उसके बाद अगले दिन आ गए सभा में. तो जैसा ही जनक राजा उनको देखे तो बोले हे मुनिवर, वो सच या ये सच? मुनिवर उनको बोले हे राजन, मैं आपको दो प्रश्न पूछूंगा, अगर आप आंसर दे दोगे तो खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा. तो बोले पूछो मुनिवर, क्या है? तो बोले हे राजन, जब आप युद्ध कर रहे थे, भले ही सपने में हो, तो आपका ये सभा था ना नहीं था? रानी थे नहीं थे? सेनापति थे नहीं थे? आपका हाथी घोड़ा सब था नहीं था? तो आप थे क्या? भाई क्या पूछ रहे हो मुनिवर, मैं तो था, मैं ही तो युद्ध कर रहा था. वंडरफुल. राजन, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, अभी आप सभा में बैठे हुए हैं, वो युद्ध है, वो सफरिंग्स है, वो वुंड्स है, वो ब्लीडिंग है? नहीं है. आप हैं?
क्या मुनिवर, मैं तो आपके सामने बैठा हूं। तो मुनिवर ने बोला, अष्टवक्र मुनि जो है वो बोले कि हे राजन, ना वो सच ना ये सच। तो मेरा जो स्टोरी था उसका तात्पर्य ये है, समरी ये है, ना वो सच ना ये सच। नाइदर योर पास्ट इज ट्रू nor whatever you are thinking that this is true is true. What is true is na wo sach na ye sach abhi sach. So ladies and gentlemen, 2025 might be a wonderful year for you, might be a bad year for you, might be an average year for you. Don't worry. In 2026, let's turn around this 2026 into the best year of our life. But it is very important for all of us to know who we are, because once you are clear who you are, it's very easy to achieve your goal. Second most important thing is to have a purpose and goal in your life. If you do not have a purpose and clear-cut goal in your life, it's very difficult to achieve it. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जब हम लोग रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं या फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, normally ask from where you are traveling and to where you will go, because it's very important to know आप कहाँ पे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं. If you do not know and randomly you are moving in your life, then what will happen? It's very difficult to achieve your purpose and goal. Now, ladies and gentlemen, you have to be very sure what exactly you need in your life. Now, all of you must be thinking, आप सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चले कि मेरा पर्पस क्या है. तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, नटसेल में, शॉर्टकट में. जो काम को करने में आपको 24/7 और 365 डेज मजा आए, और जिसको करने में आपका दिल बोलता है कि यही चीज आपको करना है, भले ही कितना मुश्किल हो, भले ही राह कितना कठिन हो, आप उसी को ही करना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर कॉलिंग, दैट इज योर पर्पस, दैट इज योर गोल. So, ladies and gentlemen, the second most important point to turn around 2026 is to know exactly what you want in your life. It's very, very important, ladies and gentlemen, to have a purpose and a goal. The third most important thing to make 2026 is the best year of your life is to have the execution. Because 99% people fail to achieve their purpose and goal because they do not know how to execute. It's very important to execute. And how to execute? I'll give you a very simple mantra which I normally follow, is to have a lion mentality. Now, all of you know a lion, isn't it? A lion is not the fastest animal in the animal kingdom like a cheetah. It is not the biggest like an elephant. It is not the most strongest like a hippo or a rhino, or the most clever like a hyena, fox, jackal. But who is the king of the jungle at the end of the day? Is the lion. Now you must be thinking, in spite of all limitations, how come a small cat is the king of the jungle? So, ladies and gentlemen, it's not the ability always that decides whether you'll be successful in life or not. It's the mentality that matters. We all are born with wonderful abilities, unique selling propositions, and we all have unique skills, unique personas. We all have a point of differentiation. It is only up to all of us to identify what exactly is that and present it to the rest of the world. So it's not the ability always, it's the mentality that matters. Best way to understand lion mentality is very simple. Now, if you observe a lion, आपने देखा होगा, what lion thinks, feels the same way and do the same thing. So, ladies and gentlemen, we need ability that is given to all of us by God. But what is important at the end of the day is the mentality. So, ladies and gentlemen, three things which will be life-changing in 2026. The first thing, you should know who you are. Very, very important to have clarity who you are. The second thing is what you are doing here. What is your purpose? What is your goal? And third most important thing is the execution. Any purpose, any goal without action, execution is a dream. And that is one of the reasons why 99% people in the world struggles financially, spiritually, health-wise, but 1% people enjoys, always stay at the top. You know why? Because it's not the ability that always matters, it's the mentality that matters. Ladies and gentlemen, these are the three steps. If you follow it carefully in 2026, it can give you a wonderful result, and I am sure it will be the best year for you. Now, let me give you a bonus point to all of you, which is very, very, very important for all of us. For gratitude to God.
for whatever you have achieved in your life, whatever blessings you have in your life, financially, professionally, personally, spiritually, socially. All the blessings, accept it, offer your gratitude to God, and offer gratitude in advance for whatever you'll be going to get in times to come. This is your own Dr. D.D. Swain, the motivational speaker, wishing all of us a wonderful 2026.